Hello my dear students, how are you? I hope you are doing well. So again we are here with a new science chapter, Periodic Classification of Elements, class 10th, chapter 5. So are you guys ready with this chapter? Let us start with this chapter. So here in this chapter we are going to discuss about the classification of elements, we'll discuss about the various types of arrangement of elements, and here we'll discuss about the periodic table. So let us start with this chapter. So initially when we talk about the history of this classification, we say that we know that matter consists of elements, compounds and mixtures, as you have studied in class 9th. And till date there are 118 elements known. Out of these 118 elements, only 94 elements are naturally occurring. Naturally occurring means they are present in nature. So सिर्फ 94 elements ऐसे हैं जो nature में present हैं. As different elements were being discovered from time to time, scientists gathered more and more information about the properties, about their nature of these elements. So जब इतने सारे elements इकट्ठे हो गए, discover हो गए, now the task is to arrange these elements, to classify these elements, because we need to classify to make our study simpler and easier. And thus it's a big task to classify the elements. So these scientists started looking for some different pattern of arranging these elements in a proper pattern, in a proper arrangement, so that we can get a good information of these elements in a very systematic and simpler way. So different scientists put their efforts in from time to time to arrange these elements in periodic table, and finally we'll be having different arrangements. So basically all those elements scattered, arranged, not arranged, discovered and so many things in front of scientists, these are the problems. So out of this chaos, basically making order, arranging them in a proper way is a basic attempt. So different scientists have started and putting their efforts in arranging and classify the elements. So we'll be learning here in this chapter how different elements are there to arrange the elements. So first we'll talk about the arranging of elements in the increasing order of their atomic masses. We can say that according to this, when elements are arranged in the increasing order of their atomic masses, there are group of 3 elements. We call it as triad. Triad means group of those 3 elements which show similar properties. So we call it as Dobriner triad also, and he arranged elements of group of 3 elements in such a way so that the atomic mass of the middle element is the arithmetic mean of atomic masses of first and third element. What does it mean? It means suppose I take, let me give you an example. Suppose I take these 3 elements, lithium, sodium and potassium. And if I consider that lithium the atomic mass is around 7, that is 6.9, sodium if I take the atomic mass is 23 and potassium if I take the mass that is given as 39. What this arrangement says that if I take the arithmetic mean of first and third element, I'll get the atomic mass of second element. What does it mean? It means that I'll take the arithmetic mean 7 plus 39 divided by 2, ऐसे ही arithmetic mean निकालते हैं, और जब इसको solve किया तो हमारे पास value आई 23, and that is the atomic mass of this middle element. So that is one of the classification that has been given by Dobriner in his law. We call it as Dobriner's law of triad. Let us discuss more about this law. So first thing is he arranged elements in such a way so that the atomic mass of the second element is equal to an arithmetic mean of atomic masses of first and third element. Now what is the major limitation? The limitation is it fails to arrange all the then known elements. उस समय जितने भी known elements discover थे उनको triad में arrange करना possible नहीं था. Means he was not able to arrange all those possible elements or known elements discovered at that time. उनको arrange नहीं कर पाए थे, even having similar properties. So on the basis of their properties he was not able to arrange. Similarly, because of this limitation, इसको accept ज़्यादा time तक नहीं किया गया. Later on, different scientists again gave different attempts to arrange elements. Some has classified into metals and non-metals. Some scientists have classified them into metals, non-metals and metalloids. Sometimes they have arranged them as electropositive and electronegative elements. But इनमें से कोई भी classification इतना fruitful नहीं रहा. सो साइंटिस्ट धीरे धीरे अटेम्प्ट्स करते गए ताकि इस क्लासिफिकेशन को और ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में ले आए, सो दैट आवर स्टडी बिकम्स मोर एंड मोर यूजफुल.
So earliest attempt was done by different scientists to arrange elements in terms of metals and non-metals, electropositive elements, non-electropositive elements, that means electronegative elements. Later धीरे धीरे classifications हुए और अलग अलग नई नई properties निकल के आई. Based on those properties नए classifications हमारे सामने आए. So as we have discussed about Dobriner triad, we say that this classification is based on atomic mass. According to this, when elements are arranged in the order of their atomic masses, groups of 3 elements which are having similar properties, they are obtained. And we have discussed one example, as I have told you, lithium, sodium and potassium. So यहाँ हम देखते हैं lithium और potassium का arithmetic means sodium के atomic mass के equal आता है. And that was the Dobriner triad, means given by Dobriner, scientist का नाम था Dobriner, and triad means group of 3 elements which are having similar properties. So कुछ और examples जो Dobriner triad के थे, like nitrogen, phosphorus, arsenic. So यहाँ हम बात करते हैं. Let us take the example. So nitrogen, whose atomic mass is 14, phosphorus atomic mass is 31, and arsenic जिसका atomic mass is 74.9. So हमने देखा 14 plus around 74.9, we can take 75 divided by 2, we can get nearly 31. It means ये triad उन्होंने arrange किया था. Similarly, he has given one more triad, calcium, strontium and barium. On the basis of that, again we are having these 3 atomic masses, arranging them and will get their atomic masses in this manner that follows this triad. Next we are having another triad, chlorine, bromine, iodine. So arranging or taking the arithmetic mean of 35.5 and 126.9 divided by 2, we get 79.9. So ये कुछ ऐसे examples थे इन triads के जो Dobriner ने explain किए थे, but limitation हम पढ़ चुके हैं that it fails to arrange all the known elements in the form of triads. जितने भी सारे एलिमेंट्स थे उन सब को हम ट्रायड फॉर्म में अरेंज नहीं कर पाए थे, एंड दैट वाज द मेजर लिमिटेशन और ड्रॉबैक. सो नाउ विल फर्दर मूव टू द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन दैट वाज डन बाय न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. लेट अस डिस्कस दिस लॉ. सो व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ऑक्टेव वर्ड आ रहा है. फर्स्ट थिंग इज न्यूलैंड, द नेम ऑफ साइंटिस्ट. व्हाट इज ऑक्टेव? सो ऑक्टेव बेसिकली मीनिंग एट्थ. So he has arranged the elements in such a way that every 8th element shows the property similar to that of first element. That means उन्होंने ऐसे elements को arrange किया कि हर 8वां element first element के जैसे property show कर रहा है, और उन्होंने उसको compare किया just like the notes of music, like we are having सा रे गा मा पा दा नी सा. So जैसे 8th note of music is similar, similarly 8th element is similar to the first element in properties. So अगर हम इसको first element माने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन इनकी प्रॉपर्टीज सेम है. Then we are having lithium and sodium, they are having same properties. Then we have sodium and potassium because it comes to the 8th element. Similarly अगर हम मैग्नीशियम और बेरिलियम को देखें तो बेरिलियम के रिस्पेक्ट में 8th एलिमेंट आ रहा है मैग्नीशियम, एंड दस बेरिलियम और मैग्नीशियम सिमिलैरिटी शो करते हैं. सो इस तरह से हमने ये देखा दैट एवरी 8th एलिमेंट इज शोइंग द प्रॉपर्टी विद दैट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, एंड वी आर हैविंग सर्टेन एग्जांपल. लेट अस स्टार्ट बेरिलियम एज द वन एलिमेंट. सो इफ आई टेक बेरिलियम एज द वन एलिमेंट, सो इफ आई राइट इट एज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. सो बेरिलियम के रेस्पेक्ट में हमारा जो 8th एलिमेंट आ रहा है वो आ रहा है मैग्नीशियम. सो दिस वे वी कैन से दैट मैग्नीशियम shows a similar property as that of beryllium, and this was the law given by Newland. Newland says हर 8वां एलिमेंट अपने पहले एलिमेंट के साथ सिमिलैरिटी शो करता है. सो आप पहला एलिमेंट अगर बोरोन से लेंगे, then the 8th element with respect to boron will be aluminium. So aluminium shows similarity in properties with that of boron. Similarly, silicon shows in similarity in properties with that of carbon. So this way he has given a law of octaves, and he compared this property with respect to the notes of music. जैसे म्यूजिक में सरगम होती है, हर 8वां सुर पहले सुर के बराबर होता है, उसी तरह से उन्होंने कहा हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट के
जैसा है प्रॉपर्टीज में. So let us move further and we'll discuss about the limitations of this law. So पहली चीज, this law is applicable only up to calcium and it is applicable only for lighter elements. He adjusted two elements in the same slot, means उन्होंने क्या किया, कोबाल्ट और निकल को एक साथ रखा जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी and thus ये लॉ वैलिड नहीं हुआ. कोबाल्ट और निकल जो बिल्कुल ही डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ही हैज अरेंज्ड दोज एलिमेंट्स अलोंग विद हैलोजेंस लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड ओनली 56 एलिमेंट्स एग्जिस्टेड इन नेचर. सिर्फ 56 एलिमेंट्स ही वहाँ नेचर में थे और एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे. सो ही वॉज एबल टू अरेंज एलिमेंट्स टिल 56, जिसमें से 20 तक ही वैलिड थे, एप्लीकेबल थे. मीन्स दिस लॉ इज वैलिड ओनली अप टू कैल्शियम हुज एटॉमिक नंबर वॉज 20. So that was the attempt given by Newland, and we come to know that this classification has been given by Newland still has limitations. उन limitations को overcome करने के लिए next we are having is Mendeleev periodic table and modern periodic table. So हमारे पास next आते हैं Mendeleev और modern periodic table. So अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट इज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की. सो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड है जब हम बात करते हैं? सो पहली चीज हम यहाँ देखेंगे कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है. किसके? एलिमेंट्स के. एंड दे आर बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक मासेस, एंड दिस एटॉमिक मास इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर. That means it is based on the atomic masses of elements, and he has arranged elements on the basis of their atomic masses. Let us now discuss further. So he has given a law, and the law says that the physical and the chemical properties of elements are periodic function of their atomic masses. Means elements को इस तरह से arrange किया गया कि उनकी जो properties थी वो atomic masses पे based थी. Then he has arranged the elements in such a way that their properties have been repeated after certain regular interval. And this repetition and properties of elements is known as periodicity. तो उन्होंने ना सिर्फ एलिमेंट्स को अरेंज किया बल्कि उनका एक रिपीटेड अरेंजमेंट को भी ऑब्जर्व किया और उसके बेसिस पे एक टेबुलर अरेंजमेंट दिया. So this was the classification given by Mendeleev, and we call this repeated arrangement as periodicity. So this is the periodicity of properties. What are the important merits or advantages of this periodic table? So Mendeleev, first thing is left vacant places. पहली चीज तो Mendeleev के टाइम पे 63 elements discover हो चुके थे. So he arranged all those 63 elements, and secondly he arranged those 63 elements in a tabular form. जब बीच में उन्होंने arrange करना शुरू किया, then he found that there are certain elements which are not showing property prior to that element, rather it is showing proper similarity in property with the next element. तो उन्होंने वहाँ पे बीच में खाली जगह छोड़ दी, खाली गैप छोड़ दिया कि यहाँ कोई और एलिमेंट आएगा जो माइट भी अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुआ है. So in this way he left some vacant spaces in this table and says that कि probably some new element is going to discover over there, and he call those elements by using the symbol EKA, eka. Like बोरोन के नीचे खाली जगह छोड़ी तो उसको लिख दिया एका बोरोन. एल्यूमिनियम के नीचे जो वैकेंट स्पेस आया उसका नाम हो गया एका एल्यूमिनियम. सिमिलरली सिलिकन के नीचे जो वैकेंट स्पेस आया उसका नाम दिया गया एका सिलिकन. So thereby he left some vacant spaces, जिससे साइंटिस्ट को पता चला कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अभी भी डिस्कवर नहीं हुए हैं जिनकी प्रॉपर्टीज इन एलिमेंट्स के जैसी हैं. प्लस उनको ये भी पता चला कि इनके एटॉमिक मासेस इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में कहीं होंगे. सो एक ऐसा एलिमेंट जो डिस्कवर्ड नहीं है, बस उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता हैं. सो इट वॉज अ गुड थिंग फॉर द साइंटिस्ट टू डिस्कवर दोज एलिमेंट्स. सो बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम में बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हुए बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट. देन ही वॉज एबल टू प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ सेवरल अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स. क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स जो डिस्कवर नहीं थे उसके लिए एक प्रिडिक्शन आ गई. उसके लिए उन्होंने एक अरेंजमेंट दिया कि एलिमेंट्स यहाँ पे हो सकते हैं, बिकॉज ही लेफ्ट सम स्पेसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, एंड दस दैट टाइम साइंटिस्ट
tried to discover new elements and they got success also in finding or discovering those new elements. So that was a big merit, big advantage of this table. Another thing is it is useful in correcting the doubtful atomic masses. There were some elements जिनके atomic masses सही नहीं थे. So when he was able to arrange the elements in the periodic table, he corrected those atomic masses. कि एलिमेंट की प्रॉपर्टी तो उसके जैसी है बट इसका एटॉमिक मास कुछ और जा रहा है, तो ही करेक्टेड दोज एटॉमिक मासेस बाय चेंजिंग द वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट आल्सो. देन नोबल गैसेस. अबाउट नोबल गैसेस उन्होंने एक सेपरेट स्पेस जगह छोड़ी. सो नोबल गैसेस कुड एकोमोडेट इन हिज टेबल विदाउट डिस्टर्बिंग द पीरियोडिक टेबल. यानी अलग से एक कॉलम बाद में नोबल गैसेस को दे दिया गया without any change, doing any change in the position of all other elements in the table. So this way he was able to arrange the most of the elements at that time in a proper place. But still there were some limitations of this table also. Let us discuss these limitations. So first is hydrogen के लिए कोई fixed position नहीं थी. There is no specific position for hydrogen. हाइड्रोजन कहाँ रखा गया था? हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी वो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर नहीं थी. हाइड्रोजन विच शोज द प्रॉपर्टी सिमिलर टू एल्कली मेटल्स, उनको हेलोजन के साथ रखा गया. हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज जो हैं हेलोजन और एल्कली मेटल्स के जैसी हैं. It shows most of the properties similar to that of alkali metals and halogens, and that was it was a major drawback of arranging hydrogen in the periodic table. So hydrogen की जो position थी that was along with alkali metals and noble gases. Next and the very important thing जिसके basis पे इसमें changes किए गए और modifications किए गए, and that was isotopes. So what are isotopes? No specific position has been given for isotope. Let us discuss an example. Isotopes क्या होते हैं? If I take an example, say hydrogen. Hydrogen exists in 3 isotopes, 1H1, 1H2 and 1H3. If I write 1 out here, it means these are the atomic number. It has 1 as the atomic number, means it has 1 proton. And what these numbers 1, 2 and 3 represent? These numbers represent atomic mass, that is mass number, sum of proton and sum of neutron. So if I try to find the atomic mass, it is 1, it is 2, it is 3. It means तीनों isotopes की atomic masses different है. Now the problem is, listen carefully. Mendeleev says elements के atomic masses के basis पे arrangement किया गया. यानी जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास कम है उसको पहले, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट. बट व्हाट अबाउट आइसोटोप्स? इफ हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स, इट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ मेंडलीफ अरेंजमेंट आपको 3 पोजीशंस देनी पड़ेंगी. 1 फॉर 1H1, अनदर पोजीशन फॉर 1H2, नेक्स्ट पोजीशन फॉर 1H3. एक एलिमेंट के लिए इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको 3 पोजीशंस देनी पड़ेंगी, विच इज नॉट पॉसिबल. Similarly, there are some other elements like chlorine. Chlorine has 2 isotopes, chlorine 35 and chlorine 37. So the problem is, again, where to arrange the same element, we need some different spaces, and that was the major drawback of Mendeleev periodic table, which needs modification. It means there is no regular trend in atomic mass. We need to arrange these isotopes on the basis of atomic mass. So position of some elements with lower atomic masses have been placed before those elements which are having higher atomic mass. That was another drawback. So अब हम बात कर रहे हैं कि atomic masses के लिए कोई regular trend नहीं था. It has been observed that in the case of nickel और cobalt का atomic mass different है. Nickel is 58.7 and cobalt is 58.9. So ज़्यादा किसका हुआ? Definitely cobalt का. But cobalt पहले है, nickel बाद में है. So such type of pair of elements are also different and anomalously arranged, and that was again a drawback for this table. So we can see this is the table that has been given by Mendeleev. अगर मैं एक overlook दूँ आपको तो यहाँ हमारे पास periods हैं. You can see 1, 2, 3, 4, 5 and 6. There are 6 periods, and then we are having total 8 groups.
Later on, several modifications has been done in this Mendeleev periodic table also, and it's been observed that one group is further subdivided into two subgroups A and B. Same is with second A and B, third, fourth, fifth, sixth, seventh. Till 7th, from 1 to 7, each group is further subdivided into two subgroups, namely A and B. जबकि 8th ग्रुप जो था उसमें इन्होंने तीन एलिमेंट्स अरेंज किए, स्पेशली 4th, 5th और 6th पीरियड में. So that was an overlook of these elements on the basis of their atomic mass. Here you can see hydrogen is with one atomic mass arranged with lithium in the same group, lithium, then beryllium 6.9, then 9, then boron 10, then carbon 12, then nitrogen 14 and so on. It's been arranged that most of these elements have been arranged in the increasing order of their atomic masses, and that was the major merit for this table. हमने जो ड्रॉबैक की बात की थी, हमने पढ़ा दैट कोबाल्ट इज 58.93 एंड निकल इज 58.7. सो कोबाल्ट को निकल से पहले रखा, जो कि बाद में होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. सो देयर आर सर्टेन ड्रॉबैक्स इन दिस टेबल आल्सो. To watch the complete video, download the UpBind educational app from Play Store and App Store.